Shabads 18 and 20, Saint Mangat Ram Ji's Vani or Divine Revelation in English. Introduction. This commentator has difficulty understanding the profound teaching of Maharaji or Saint Mangat Ram Ji. He requests forgiveness for his mistakes. This writing is a paraphrase, not the literal translation of the original in Hindi. Shabad 18, line 1. नित ही मन में करो विचार, नित ही मन में करो विचार, साचा नाम परम सुख सार, साचा नाम परम सुख सार. True name alone can give the writer genuine happiness. Comment. Sensory pleasures may give initial fleeting satisfaction, but they lead to misery in the end. Line 2. उठत बैठत नाम ध्याओ, उठत बैठत नाम ध्याओ, प्रभ अपने को शीस निवाओ, प्रभ अपने को शीस निवाओ. Lord, help the writer remember the name all the time. Let him surrender the outcome of his actions to you. Line 3. आज्ञा में देखो सब किरिया, आज्ञा में देखो सब किरिया, सत स्वरूप सकल पसरिया, सत स्वरूप सकल पसरिया. Help the writer see every happening in your will. You pervade everywhere. Comment. With Saint Mangat Ram Ji's blessing, he may start seeing God in every person. Line 4. साची नीति नित उठ घाल, साची नीति नित उठ घाल, साचा शब्द अमीरस भाल, साचा शब्द अमीरस भाल. He needs to earn the genuine wealth of the name. He must drink the nectar of the word. Line 5. जन्म मरण को विरत त्याग, जन्म मरण को विरत त्याग, निर्मल शब्द का गाओ राग, निर्मल शब्द का गाओ राग. With the Guru's blessing, the cycle of recurrent births and deaths would cease. He must sing the praise of the holy word. Comment. Saint Mangat Ram Ji's blessing would stop his cycle of recurrent births and deaths. Line 6. Shabad avinashi, Shabad nirvana, Shabad avinashi, Shabad nirvana, घट घट अंतर शब्द समाना, घट घट अंतर शब्द समाना. The word is imperishable. It would liberate the writer from the ceaseless cycle of recurrent births and deaths. It is within every being. Line 7. अवगत पूरख अनादि देव, अवगत पूरख अनादि देव, निर्मल चेत से परसो सेव, निर्मल चेत से परसो सेव. God has no beginning and is pure consciousness. Let the writer serve him with pure mind. Line 8.
ज्यों ज्यों शब्द सार कुधाई, ज्यों ज्यों शब्द सार कुधाई, मन मुख भरम जीव कजाई, मन मुख भरम जीव कजाई. When the writer contemplates the word, the illusion created by his wayward mind goes away. Comment. Saint Mangat Ram Ji teaches him a method to control his undisciplined mind. His mind is powerful like a wild elephant. It strays in lust, anger, greed, attachment and egotism. Line 9. दुर्मत नास सम्मत प्रकाशी, दुर्मत नास सम्मत प्रकाशी, हृदय चेत केवल अविनाशी, हृदय चेत केवल अविनाशी. His ignorance dispels and he is enlightened. With blessing of the Guru, he remembers the eternal all the time. Line 10. मिथ्या देह की ममता जाए, मिथ्या देह की ममता जाए, सत्य स्वरूप शबद घर पाए, सत्य स्वरूप शबद घर पाए. His attachment to this false body dissipates. He finds the eternal word within this body. Comment. This body is false because it is momentary like a bubble. He is attached to this perishable body and is fearful all the time. Line 11. कभू न भूलो साचा नाम, कभू न भूलो साचा नाम, सिमर सिमर पावे विश्राम, सिमर सिमर पावे विश्राम. Help him remember the name all the time. He finds peace by remembrance. Line 12. सार ज्ञान ये ही है मीत, सार ज्ञान ये ही है मीत, सर्जनहार को राखो चीत, सर्जनहार को राखो चीत. He must remember the Creator all the time. Remembrance is the essence of all the wisdom and the substance of every scripture. Line 13. Maya chakkar at ghana kalesha, Maya chakkar at ghana kalesha, बिना विवेक नहीं मिटे संदेशा, बिना विवेक नहीं मिटे संदेशा. Maya, or the illusion of the phenomenal world, leads to immense suffering. He cannot escape this calamity without the wisdom given by the Guru. Comment. Wisdom given by Saint Mangat Ram Ji would remove his anguish. Line 14. सत विवेक हृदय में धार, सत विवेक हृदय में धार, चेतन स्वरूप सिमर निरंकार, चेतन स्वरूप सिमर निरंकार. He must follow the teaching of the Guru and remember formless God, the pure consciousness. Line 15. निर्मल चेत से नाम कमाओ, निर्मल चेत से नाम कमाओ, सतगुर सीख सतधाम समाओ, सतगुर सीख सतधाम समाओ. The writer needs to earn the name with pure mind. He
He would reach his real home by following the Guru's teaching. Comment. He would purify his mind by following the 5 means of simplicity, service, holy association, truth and remembrance of God. Line 16. जग आवन ये भेद विचार, जग आवन ये भेद विचार, नाम प्रभु में प्रीति धार, नाम प्रभु में प्रीति धार. He must reflect that the purpose of human life is to love the name of God. Comment. Mere eating, drinking and being merry is not the purpose of his life. Line 17. करता हरता ठाकर चेत, करता हरता ठाकर चेत, आज्ञा मान सब मिटे विखेप, आज्ञा मान सब मिटे विखेप. He must know that God is the doer and the undoer. If he accepts the will of God, his restlessness will go away. Line 18. भरम फुलवाड़ी जगत की रचना, भरम फुलवाड़ी जगत की रचना, काल कल्पना सकल ये सुपना, काल कल्पना सकल ये सुपना. The word is a flower bed of delusion. It is false like a dream. It is a house of death. Line 19. नाम पदारथ हृदय चाख, नाम पदारथ हृदय जाख, जाए व्याधि दुर्मत साख, जाए व्याधि दुर्मत साख. Let the writer savor the name. His disease of ignorance would be cured. Line 20. एक स्वरूप भगवंत को मन अंतर सदा चितार, मंगत दुस्तर जगत से तब जन उतरे पार. एक स्वरूप भगवंत को मन अंतर सदा चितार, मंगत दुस्तर जगत से तब जन उतरे पार. Saint Mangat Ram Ji says the writer would cross the terrifying ocean of the world by remembering God. This is the end of Shabad 18. Shabad 20, line 1. साचा शब्द पायो अविनाशी, साचा शब्द पायो अविनाशी, दुर्मत छाया रोग विनाशी, दुर्मत छाया रोग विनाशी. The writer must find the word, the truth. Then the Guru would dispel the illusion created by his ignorant intellect. Comment. If he does not realize the word, he will continue to identify himself with his body. Line 2. अंतर चेत पाई वड्याई, अंतर चेत पाई वड्याई, त्रिखा विनाश शांतत पाई, त्रिखा विनाश शांतत पाई. He would discover glory of God within. His thirst would be gone and he would experience
indescribable peace. Line 3. प्रभ दाते ने कियो निहाल, प्रभ दाते ने कियो निहाल, बंधन भरम काटा दुख जाल, बंधन भरम काटा दुख जाल. God, the greatest giver, would bless him. He would cut the net of the writer's bondage and remove his misery. Comment. Saint Mangat Ram Ji would cut the bondage of his attachment to the body. Line 4. दीन दयाल हूँ नित सरनाई, दीन दयाल हूँ नित सरनाई, बहुर न व्यापे दुर्मत काई, बहुर न व्यापे दुर्मत काई. Lord, you are kind towards the humble and meek. The writer always seeks your refuge. Dispel his ignorance. Line 5. सत सील हृदय पर गासो, सत सील हृदय पर गासो, दीन भाव में करु निवासो, दीन भाव में करु निवासो. Illuminate his heart with the truth, humility and morality. Illuminate his heart with the truth, humility and morality. Line 6. तू भंडारी सरब का दाता, तू भंडारी सरब का दाता, मांगे प्रेम चरण रंग राता, मांगे प्रेम चरण रंग राता. You are the greatest giver and your stores are inexhaustible. The writer begs for your fervent devotion. Line 7. सन्मुख पर गट रहो त्रैकाल, सन्मुख पर गट रहो त्रैकाल, सिमर सिमर मन होए निहाल, सिमर सिमर मन होए निहाल. Reveal yourself to the writer always. Bless his mind with the bliss of your remembrance. Line 8. नाम रूप जाए अंधकार, नाम रूप जाए अंधकार, अनामी धाम पाऊँ निर्धार, अनामी धाम पाऊँ निर्धार. Dispel the darkness of names, forms and concepts. Your destination is nameless, beyond names and forms and ineffable. Line 9. तू ही तू एक प्रकाश, तू ही तू एक प्रकाश, जिस आधार करें सकल विलास, जिस आधार करें सकल विलास. You alone are the light which illuminates and animates every being. Line 10. परमेश्वर तू उस्तत योग, परमेश्वर तू उस्तत योग, अनमत जीव के हरो सब रोग, अनमत जीव के हरो सब रोग. You are worth every praise. Remove all the suffering of this ignorant being. Line 11. क्या बखान तेरी वड्याई,
क्या बखान तेरी वडियाई, आपे करता खेल खिलाई, आपे करता खेल खिलाई. The writer is unable to describe your glory. You are the doer of everything. The writer is a puppet and you are the puppeteer. Line 12. सकल ताप से जीव को राखो, सकल ताप से जीव को राखो, अपना ज्ञान दीजो सत साखो, अपना ज्ञान दीजो सत साखो. Remove suffering of the writer. Bless him with wisdom. You are the truth and the witness of everything. Comment. The writer suffers due to his ignorance. If he follows the teaching of Saint Mangat Ram Ji, his anguish would be removed. Line 13. बारंबार करूं प्रणामा, बारंबार करूं प्रणामा, तू परमेश्वर स्थित धामा, तू परमेश्वर स्थित धामा. The writer bows again and again to the eternal Lord. Line 14. तेरी महिमा चित आए समाए, तेरी महिमा चित आए समाए, प्रभुदाता जी होत सहाय, प्रभुदाता जी होत सहाय. Help the writer to see your glory in every human being. Line 15. अंध बुद्धि विचार सहीना, अंध बुद्धि विचार सहीना, दुर्मत भरम में नित लपटीना, दुर्मत भरम में नित लपटीना. He is uninformed, unwise and deluded. Line 16. कह बिद राखूं तेरी ओट, कह बिद राखूं तेरी ओट, मोह माया अत धारू खोट, मोह माया अत धारू खोट. How can the writer surrender to you completely? He is tainted with attachment and illusion. Comment. Attachment to his ego, vanity and self-sufficiency prevents his surrender to Saint Mangat Ram Ji. Line 17. सकल विकार दुविधा को तारो, सकल विकार दुविधा को तारो, निर्मल प्रेम पाऊँ नाम आधारो, निर्मल प्रेम पाऊँ नाम आधारो. Remove all his deviations and dilemmas. Bless him with sublime love and dependence on the name. Comment. His dilemma is wanting God and worldly luxury simultaneously. Line 18. 64 घड़ी करो प्रभदात, 64 घड़ी करो प्रभदात, खिमा गरीबी चित रहे समात, खिमा गरीबी चित रहे समात. Bestow him humility and forgiveness all the time. Comment. God will forgive him only if he forgives others. He must not hold grudges and resentments. Line 19.
नाम आधार ले पाऊं धीर, नाम आधार ले पाऊं धीर, जन्म जन्म की हरो प्रभु पीड़, जन्म जन्म की हरो प्रभु पीड़. Bless him with patience and the anchor of the name. Remove his anguish of countless lives. Comment. Protection of the name never fails. Worldly supports like money, power, friends, relatives, names and fame fail. Line 20. संकट हरन मंगल का दाता, प्रभु का नाम चितार, मंगत जतन ये सार है, नित ही नित जप सार. संकट हरन मंगल का दाता, प्रभु का नाम चितार, मंगत जतन ये सार है, नित नित जप सार. God's name removes every calamity and grants total happiness. Saint Mangat Ram Ji says the writer must strive to remember the name. This is end of the Shabad 20.